Assalamu alaikum dear students of class 4. How are you? I hope you will be good and enjoying at your home. Welcome to your English class. Open your book OPE page number 26. Here we are with unit 5. Let's take. Here is unit 5 lesson 1. Dear students, in this lesson we are going to study that how the present continuous tense express the future plans. Here are the sentences. There are two verbs given. Now we have to choose the correct word from these two. This is the conversation between Mrs. Bet and Dan. We have to read the conversation and choose the correct word. Number 1 is Mrs. Bet is saying, "What are you doing or going to do on Saturday?" Dear students, you can see here a circle on doing. Just like that, we have to circle all the correct words from these sentences. We have to choose verbs. What are these? These are two verbs, doing and going. Now we have to put the right verb in the sentence. Mrs. Bet is asking from Dan that what are your plans about Saturday? Are you free or not? Now that Dan is saying number 2 sentences here. Here are two verbs, playing and going to play in a volleyball match in Stratford. Dear students, in previous lessons we studied about going to form. Going to form is a future tense phrase. Talk about things that are planned for future. Going to form हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमने प्लान कर ली है और हमने डिसाइड कर लिया है और हम वो करने जा रहे हैं. मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फॉर्म है, फ्यूचर के लिए ये यूज़ होता है ये फ्रेज़. तो वो चीज़ जो हमने डिसाइड कर ली है तो हम उसको गोइंग टू के ज़रिए एक्सप्रेस करेंगे. I am going to buy a new car. Okay, this is what I have decided or planned already. Okay, so here in this line it is also written in going to form, going to play in a volleyball match in Stratford. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई एम प्लेइंग भी लिखा हुआ है, गोइंग टू प्ले इन अ वॉलीबॉल मैच ये भी लिखा हुआ है. अब हम इन दोनों में से क्या चूज़ करेंगे? हम यहाँ प्लेइंग चूज़ करेंगे. ठीक है, गोइंग टू भी सही है, गोइंग टू एक सही तरीका है फ्यूचर प्लान एक्सप्रेस करने का. गोइंग टू भी लिखा हुआ है, ये भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे प्लेइंग चूज़ करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. नाउ डोंट बी कंफ्यूज, सर्किल द प्लेइंग. Now the question is why we circle the playing. It is the ing form of the verb that is used to express the current time, present time. But here we are talking about the future. Why we are using the present continuous tense for future? So dear students, for that answer, note that we can use present continuous tense for an action that has already been arranged to take place in the near future. For example, I am playing in a volleyball match in Stratford. So let's take a simple example. Someone is saying, I am going to Karachi, but he is sitting next to you. He is not in the car. He is not on the road. That means this will happen after some time. So for expressing future, we will say that I am going to Karachi tomorrow. We have to add place or time for telling our plans. So dear students, here Dan is saying about his plan that I am playing in a volleyball match in Stratford. Now number 3, Mrs. Bet, how are you getting or going to get there? What is the right? Here are two verbs, getting and going to get there. So we have to avoid going to, but going to is the right sentences.
डियर स्टूडेंट्स, जो गोइंग टू है वो राइट है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब कोई काम हम थोड़ी टाइम बाद करने वाले हैं, हमने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है, तो हम वो फ्यूचर टेंस के ज़रिए फ्यूचर टेंस के लिए प्रेजेंट टेंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ज़रिए इस्तेमाल करेंगे कि ये हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे गोइंग टू को नहीं चूज़ करना, हमें यहाँ पे गेटिंग चूज़ करना है। सर्किल द वर्ड गेटिंग। Here is, so Mrs. Bat is saying, how are you getting there? Mrs. Bat जो है वो उनसे पूछ रही हैं कि तुम वहाँ कैसे जाओगे। Now sentence number 4, choose yourself that what will be the right verb. Dan is saying that the coach is leaving or going to leave from school at midday. Choose the correct word, circle the correct word. Okay. Number 5, Mrs. Bate, are you coming or going to come home in time for supper? अब मिसेस बेट डैन से पूछ रही है कि क्या तुम घर सही टाइम पे आ जाओगे। तो हम यहाँ पे क्या चूज़ करेंगे, जल्दी से सर्किल करें अपने बुक में। ठीक है, आपने सर्किल कर लिया। आई होप आपने ये वाला वर्ब सर्किल किया होगा, coming. Yes, Mrs. Bate is saying, are you coming home in time for supper? Okay. Dan is saying, oh yes. Number 6, Mrs. Bat, are you going to swimming? No, not swimming, sorry. Are you going to win? Now Mrs. Bat is saying that, are you going to win? Here is right, winning, but we will not choose winning. We will choose that going to win, because we want to know the destination, the aim of the Dan, that what the Dan decided to do. Now Dan is saying, Dan, I hope so. I think we are better than the other team. मिसेस बेट ये जानना चाहती हैं क्या डैन ने ये ठान लिया है कि वो जीतेगा वॉलीबॉल मैच, वो खेलने जा रहा है तो उसने वो जीत के ही आएगा। तो उसने क्या, उसका इरादा पूछ रही कि क्या वो जीत के आएगा। तो डैन कह रहा है कि हाँ इंशाल्लाह, होप सो, उम्मीद रखता हूँ कि हम जीतें, क्योंकि जो दूसरी टीम है वो हमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। So dear students, I hope you understood that how we express future plans through present continuous tense. Now read the conversation and try to understand the formation of the sentences. Here is written, I am playing. First we have to write I am, then verb in ing form, playing in a volleyball match. After that, any place or any time. Here is the place in Stratford. Okay, just like that. I'm playing in volleyball match in Stratford, and I'm playing in a volleyball match tomorrow. Okay, after the verb you have to write what you are going to do. Okay, I know you must know about the parts of the sentences. Here is the subject, verb, object. Subject is I, she or he or any person. Verb is what the work you do, playing, reading or dancing or whatever you do. Object is which tells something about the verb or affected by the verb, that what kind of the verb is. And after that, time, tomorrow, after some time, in an hour. तो इस तरह से आप जो फ्यूचर प्लान के बारे में सेंटेंसेस लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे कि पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका वर्ब का असर हो उस पर। ठीक है, तो वर्ब वो कैसा वर्ब है, वो काम कैसा कर रहा है। जैसे आप रीडिंग करें, रीड अ बुक,
रीड एक वर्ब है, उसमें बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम बुक वो हमें बताता है कि हम काम कैसे करें, ठीक है। अब आप टाइम कहाँ पे लिखेंगे, एंड में आप टाइम लिखेंगे कि आपको टाइम, आप ये जो काम है आप आधे घंटे बाद कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, या आप थोड़े टाइम के बाद कर रहे हो, ठीक है। अब आपको इसकी फॉर्मेशन समझ में आ गई। अब आपका होमवर्क ये है कि आप कल के दिन में क्या करने वाले हैं, आप उसके 10 सेंटेंसेस लिखेंगे। यू हैव टू राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट योर फ्यूचर प्लान ऑफ टुमारो। Just like that, I am playing cricket tomorrow. I am going to visit zoo tomorrow. I am reading stories tomorrow. यू कैन ऐड दिस टुमारो इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग। अगर आप लिखना चाहें कि आप दोपहर में करने वाले हैं, शाम में करने वाले हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट मैच टुमारो इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग। So dear students, I hope you understood the lesson. I'll be back with another interesting lesson. Till then, Allah Hafiz, take care.